In the last lecture, we have seen the different types of molecular orbitals that will be formed, like sigma 1s, sigma 1s star, sigma 2s, sigma 2s star. ये सब देख के और उनके एनर्जी का ऑर्डर भी देखा हमने. For n less than or equal to 14, you have one order, and that particular order arises because of s and p orbital mixing. 2s 2p mixing की वजह से वो arise होता है. n greater than 14, you don't have any s and p mixing. So जो हम expect करते हैं एनर्जी का ऑर्डर होना चाहिए वही आता है. The expected is 1s जो ऑर्बिटल है, it will be closer to the nucleus, so इनका एनर्जीज कम होना चाहिए. So sigma 1s as it is bonding molecular orbital, इसका एनर्जी सबसे कम. उसके बाद sigma 1s star, उसके बाद sigma 2s star, उसके बाद sigma 2pz का कम होगा because it is formed by head on overlap. pi 2px pi 2py का sigma 2pz से ज्यादा होना चाहिए because it is formed by sidewise overlap. But in case of n less than or equal to 14, ये दोनों में रिवर्स होगा. बाकी सब जो हम एक्सपेक्ट करते हैं वही आएगा. ये जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में पाई बॉन्डिंग के वजह से कम ओवरलैप होके you will be having lesser instability when compared to the head-on overlap instability. So इसलिए pi star 2px pi star 2py comes first when compared to sigma star 2pz. Okay. और हमने इनके शेप्स के बारे में भी कुछ डिस्कशन किया. And we have also seen the nodal planes. The number of nodal planes in anti-bonding molecular orbitals are always greater when compared to the bonding molecular orbitals. Okay. ठीक है. उसके बाद we have started filling the electrons in different diatomic molecules. सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है उस diatomic molecule में total number of electrons कितना है. Once you know that, you will be filling the electrons in this particular order. In hydrogen, you have only 1s orbital. So 1s of one hydrogen and 1s of another hydrogen mix to form two molecular orbitals. One is bonding molecular orbital and the other is anti-bonding molecular orbital. In hydrogen, as there are only two electrons, both the electrons are present in bonding molecular orbital. There are no electrons present in anti-bonding molecular orbital. And we have defined bond order as number of bonding electrons minus the anti-bonding electrons divided by 2. And ये जो particular case में the nature of the bond is 2 center 2 electron bond, and it is 2 center 2 electron sigma bond. Then we have seen for He2 molecule, as the bond order coming to be 0, we can conclude that He2 molecule doesn't exist. Okay. उसके बाद H2 positive ion के बारे में भी देखा हमने. In this case, you have half bond. So ये जो half bond जो है, we can have half bond in case of MOT. रेजोनेंस के केस में हम ऐसा कुछ बॉन्ड ऑर्डर में 1.5 1.33 ऐसा कुछ देखा है. उसमें भी कुछ देयर इज नो कंप्लीट बॉन्ड. उसके अलावा इन VBT we will always have complete bonds, complete pi bond, complete sigma bond. In case of resonance, you will be distributing the pi electrons and you are having some bond order in fraction. If there is no resonance, you will always have complete bonds. The bond order will be 1, 2 or 3. But MOT में you can have bond order half. Okay, bond order half 1.5 2.5 ये हो सकता है. And इस केस में जो भी बॉन्ड के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, it is only one electron which is present or which is controlled by two centers, hence it is called as two center one electron bond. H2 minus में you have total of 3 electrons present in between two centers, hence it is called as two center 3 electron bond. Okay. And this case में bond order जो है, it is also half. Even in H2 positive also it is half. But as the electron is present in anti-bonding molecular orbital, this is relatively less stable when compared to H2 positive. So H2 positive is more stable than H2 minus. उसके बाद हमने Li2 के बारे में डिस्कस किया, Be2 के बारे में डिस्कस किया. Be2 also doesn't exist because the bond order is 0. B2 does exist, and इसमें जो bond है, ये जो pi, this is one pi electron cloud, this is another pi electron cloud, and they contribute to half of bond. Okay, there are two pi bonds whose bond order is half. इसके corresponding anti bonding molecular orbital में कुछ electron नहीं है, so इसके respect में bond order क्या होगा? 1 minus 0 divided by 2, half. इसके respect में bond order फिर से half. Okay, so you have two half pi bonds, and the nature of the bonds are two center one electron bond.
ओके, ठीक है। ये जो हम लेफ्ट हैंड, ये जो रिप्रेजेंटेशन है ना, दीज आर फॉर इनिशियल एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होके यू आर गेटिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइंड are nothing but the number of molecular orbitals formed. 1 2 3 1 2 3 6 है, so either भी you have 6 molecular orbitals. Okay, N2 के केस के लिए करना है हमको, and in case of N2 first write the electronic. बहुत लोग मुझे send किया है अपना answers, they are writing this molecular configuration wrong. molecular configuration में आपको ऐसा कुछ लिखना पड़ेगा, सिग्मा सिग्मा स्टार पाई पाई 5 स्टार, वैसा कुछ लिखना पड़ेगा। आप लोग कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के भेजा मुझे, दैट इज नॉट राइट। फर्स्ट आई एम मार्किंग नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3। अभी ये जो 1s2 2s2 के वजह से जो भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मिलता है वो अपने आप में कैंसिल हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर, राइट एवरीवन? everyone in the lecture? Yes, sir. Okay. Yes, sir. तो 1s2 2s2 के वजह से जो भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मिलता है हमें, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में और एंटी बॉन्डिंग में बनने की वजह से वो कैंसिल हो जाएगा ना नेट में बॉन्ड ऑर्डर। सो वो वाला पार्ट रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूं मैं, आई एम डायरेक्टली गोइंग टू द 2p पार्ट। सो यू हैव 3 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 1 2 3। नाउ दीस ऑर्बिटल्स आर कंबाइनिंग टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, और इनका एनर्जी का ऑर्डर क्या है? सबसे लीस्ट में फर्स्ट यू हैव pi 2px pi 2py ना। okay, this is pi 2px pi 2py and less than or equal to 14 के लिए ऑर्डर यही है। then you have sigma 2pz, after that you have pi star 2px pi star 2py। इसके बाद हमारे पास सिग्मा स्टार 2pz। is this the proper diagram for MOT? अभी टोटल इलेक्ट्रॉन्स p के अंदर कितना है? फास्ट 3 + 3 टोटल मॉलिक्यूल के अंदर देख रहे हैं हम। 6. Okay, inside the molecule you have 6 electrons. So in the molecular orbitals you need to fill those 6 electrons and you need to follow all those rules which are Aufbau principle, Pauli's exclusion principle and Hund's rule. So 6 electrons है 1 2 3 4 5 6. So in total how many bonds you have? 3. पहले bond order find कर लेते हैं। The bond order is 6 minus 0 divided by 2, which is equals to 3. What does bond order indicate? Bond order tells you about the number of bonds between two atoms. So 3 का मतलब क्या है? You are having 3 bonds between 2 nitrogen atoms. And individually हम nature of bonds देख रहे हैं, तो individually if you are comparing the nature of bonds, tell me the nature of bonds with respect 1.5. to, देखो with respect to 2px, इसके करस्पॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग में कुछ इलेक्ट्रॉन नहीं है। सो इसके वजह से बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? 2 - 0 डिवाइड बाय 2, यू आर हैविंग 1 पाई बॉन्ड। ये वाला भी 2 - 0 डिवाइड बाय 2, इसके वजह से भी 1 पाई बॉन्ड। इसके वजह से 2 - 0 डिवाइड बाय 2, यू आर हैविंग 1 सिग्मा बॉन्ड। आया समझ में ये वाला पार्ट? So in total you have 2 pi bonds and 1 sigma bond with सबका bond orders कितना है? Bond order equals to 1. Okay, and what are the nature of the bonds?
सबके लिए 2 सेंटर 2 electron bonds. All those individual 3 bonds, we will say that 2 center 2 electron bonds. सारे 3. I hope this is clear. और इसका configuration कैसे लिखेंगे? The configuration will be sigma 1s2 sigma star 1s2. उसके बाद sigma 2s2 sigma star 2s2. After this, you are filling pi 2px, right? So pi 2px2 pi 2py2, then sigma 2pz2. This is the configuration of N2 molecule. A molecule का configuration है, not the configuration of the atom. This is the configuration of the molecule. You can write this particular part as kk star. Is this clear? ये जो nitrogen molecule है, it is highly stable because its bond order is 3 and all of the contributing electrons, all the electrons which are contributing for the bond, they are present in the bonding molecular orbitals. None of the electron is present in anti-bonding molecular orbitals. N2 is the most stable diatomic gas. इसलिए उसका percentage atmosphere में कितना है? I think it is 71, right? Yes, sir. Yes, Okay, sir. इतने ज़्यादा percentage है. The reason being the molecular stability of N2 is very high. And you can explain that based on MOT as all the bonding electrons are present in bonding molecular orbitals. And the bond order is 3. 3 bonds है 2 atoms के बीच में. I hope this is clear. Sir, वो nature of bonds एक बार कौन सा? nature of bonds. देखो, ये जो bonds है individual bonds के बारे में बात करेंगे. ये pi 2px के वजह से क्या हुआ, ये 2px के वजह से contribution क्या है, 2py के वजह से contribution क्या है. इसके corresponding anti bonding में कुछ electron नहीं है. Okay, so these 2 electrons are controlled by 2 centers, 2 center 2 electron bond. अगर इसके corresponding में एक electron रहता तो we will say 2 center 3 electron bond. Okay, ये जो 3 electrons की वजह से हुआ है. Okay, sir. Okay, अगर इसमें एक ही electron है तो it will be called as 2 center 1 electron bond. So you can have 3 different types. 2 center 2 electron, 2 center 1 electron, 2 center 3 electrons. 2 center 4 electron नहीं रहेगा क्योंकि bond order net में 0 आ जाएगा. Okay. Next, oxygen का configuration 1s2 2s2 2p4. Again, I am not showing the orbitals 1s2 and 2s2. Okay. टू पी फोर मतलब 1 2 3 4 1 2 3 4. So in total P के अंदर हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 8 electrons है. And this is the case for n greater than 14. If you have n greater than 14, सबसे least energy वाला पहले कौन आएगा? Sigma 2pz. Very good. First you will have sigma 2pz. After this you will have pi 2px, pi 2py. Pi 2px, pi 2py. इसके बाद pi star 2px, pi star 2py. ये तो सेम ही रहेगा. Pi star 2px, pi star 2py. Then you have Sigma star 2pz. sigma star 2pz. Okay. Now in total you have 8 electrons. So you need to fill 8 electrons. So 8 electrons बढ़ते हैं 1 2 3 4 5 6. उसके बाद 7 and 8. Okay.
you can clearly see two unpaired electrons present in anti-bonding molecular orbitals. Because of the presence of unpaired electrons, we say oxygen is paramagnetic. So ये जो paramagnetic nature of oxygen, it can be explained by MOT. We cannot explain that by VBT. Clear? Pehla part. Okay. Tell me the bond order. 4. 4. It is bond order. Bonding electrons are 6 and anti-bonding electrons are 2. Divide by 2. 4 by 2, which is equals to 2. Bond order is 2. 2. The highest bond order can be 3. We cannot have bond order greater than 3 anywhere. Okay, नाइट्रोजन के अंदर ही 3 बॉन्ड्स है. ऑक्सीजन के बीच में इनके with VBT also you will get bond order as 2. So इस केस में भी bond order is 2. What will be the individual nature of the bonds? This bond is, the bond order for this is Half. 1. हाफ किधर है? इसके corresponding anti-bonding में कुछ नहीं है. हाँ. Okay, इनके लिए अलग से bond order. For this 1.5. bond is half, 1.5 नहीं, half. And for this bond order is half. सर उसके 1.5 करस्पॉन्डिंग है ना ऊपर, उसको माइनस करेगा या प्लस करेगा? बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाय 2. बॉन्डिंग प्लस एंटी बॉन्डिंग नहीं है, तभी आपको 1 प्लस हाफ आपको 2 आएगा. ओके, हाँ सर. so you have one sigma bond whose nature is 2 center 2 electron bond. Okay, and you have one sigma bond and इसका bond order भी क्या है? It is 1. You have 2 pi bonds with bond order equals to half each. Okay, bond order is half each and nature of pi bonds क्या है? 2 center 3 electron. बस समझ में आ रहा है सब लोग को? नेचर ऑफ बॉन्ड्स, pi bonds, 2 center 3 electron bond. 2 centers controlling 3 electrons. ये वाला 2 center 3 electron. Is this clear? Yes sir. Okay. Okay. If I am forming O2 positive, which is more stable, O2 or O2 positive? If I am having O2 positive, no. O2 positive will be more stable according to MOT because O2 positive में क्या कर रहे हैं? I am removing an electron from the anti-bonding molecular orbital. Anti-bonding molecular orbital से electron निकालने से क्या होगा? उसका stability बढ़ेगा because anti-bonding molecular orbital electrons contribute to instability ना. और else bond order देखो उस टाइम पे O2 positive का bond order कितना होगा? 2.5 हो जाएगा. ओके, O2 पॉजिटिव के अलावा आप लोग इसका all of you try to show the MOT structure for NO. NO is odd electron species. We cannot explain this based on VBT. So we will be explaining this based on MOT. So draw the molecular structure of NO. इस केस में नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग से मार्क करना है, ऑक्सीजन का भी मार्क करना पड़ेगा. नाइट्रोजन इज 1s2 2s2 2p3. ऑक्सीजन इज 1s2 2s2 2p4. ओके, इसके 1s2 2s2 और इसके 1s2 2s2 दोनों में अपने आप में मिलके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कैंसिल हो जाएंगे.
है कि नहीं? हाँ सर। Yes, sir. So I will be showing only again इनके p orbitals mixing. इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स है एंड ऑक्सीजन के केस में यू हैव 4 इलेक्ट्रॉन्स. So combine them and what are the total number of electrons? Total number of electrons are equal to 15. So the order is for n greater than 14 के लिए order. So सबसे नीचे sigma Sigma 2pz. sigma 2pz and उसके बाद you have pi 2px pi 2py. Then you have pi star 2px pi star 2py. Then sigma star 2pz. Okay. टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितना है अभी टी में? 3 + 4 you have total 7. of 7 electrons. So 1 2 3 4 5 6 7. Now tell me the bond order. 2.5. 2.5 which is 6 minus 1 divided by 2 which is equal to 2.5. So individual nature of the bonds देख रहे तो हम its bond order is equals to 1 and इसका corresponding bond order इसका भी 1 है ना. ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इसके वजह से बॉन्ड ऑर्डर विल बी हाफ बिकॉज उसके करस्पॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग में आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है. ओके सो यू हैव 1 sigma bond with bond order equals to 1 and nature of the bond is 2 center 2 electron bond. You have total 2 pi bonds, one with bond order 1 which is 2 center 2 electron bond, other with bond order half. Nature of the bond क्या होगा? 2 center 3 electron bond. 2 center 3 electron bond. I hope this is clear. Okay. If they are paramagnetic species, even NO is the paramagnetic species. Can we find magnetic moment? Paramagnetic species के लिए often हमको ये भी पूछा जाता है what will be the magnetic moment? Magnetic moment is formula is Root under n into n plus 2. n plus 2 Bohr magneton. Yes sir. तो unpaired electrons कितना है इस केस में? 1. 1. 1 root over 1 into 1 plus 2 which is root 3. If you have a number of unpaired electrons 1, the answer will be close to 2 which is equals to 1.732. Oxygen का 3. you have 2 unpaired electrons. Root over 2 into 2 plus 2 root 8. Root 8 is a value close 2 to point something. close to 3. Okay, 2.8 2.414 2.82. 2.82 na. Okay, Yes. 2.82. I hope this is clear to everyone. ओके आप लोग को एक टेबल जैसा भी देता हूँ, आप लोग टेबल याद कर सकते हो फॉर सॉल्विंग क्वेश्चंस वेरी फास्ट इन एंट्रेंस एग्जामिनेशंस. और यू कैन वो जो ऑर्डर में जल्दी पुट करके आप लोग बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैं तो टेबल याद रखने के लिए
I won't prefer. अगर in case आपको जल्दी जल्दी करना है, you can remember. But अगर गलत याद किया तो गलत हो जाएगा. If you have number of electrons as 10, अगर MOT में fill कर रहे तो आप लोग को तब bond order 1 आएगा and the number of unpaired electrons will be 2. 11 है तो bond order will be 1.5, number of unpaired electrons will be 1. 12 है तो bond order आपको 2 आएगा, number of unpaired electrons 0. 13 है तो bond order will be 2.5, number of unpaired electrons 1. 14 है तो nitrogen का case, bond order will be 3, again it is 0. Okay. 15 है तो हमको थोड़ा order reverse करना पड़ेगा, bond order will be 2.5, unpaired electrons 1. 16, bond order 2, unpaired electrons 2. 17, bond order 1.5, unpaired electrons 1. 18, bond order 1, unpaired electrons 0. Okay. Clear? एक क्वेश्चन देता हूं, ये करो. Arrange these species in the order of stability. Arrange Li2, Li2 negative and Li2 positive in the order of stability. All of you do this question. Arrange Li2, Li2 minus, Li2 positive. सबसे पहले comparison के लिए you can start with bond order. If the bond order is same, then you can see for the number of bonding electrons and anti-bonding electrons. सर बॉन्ड ऑर्डर आने के बाद More is the bond order, more are the attractive forces between two atoms, greater will be the stability. You need to arrange the species in the order of stability. Li2 minus greater than Li2 greater than Li2 plus. Okay. सबसे पहले इंडिविजुअल में इलेक्ट्रॉन्स कितना है वो देखो. Li2 में इलेक्ट्रॉन्स, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितना है? 6 इलेक्ट्रॉन्स. 6. Li2 माइनस में 7. हाँ, Li2 पॉजिटिव में you have 5 electrons. Okay. 5. Configuration is 1s2
लिथियम के लिए 1s to 2s1 है ना। उसके बाद अगर डायग्राम आपको जल्दी ड्रॉ करना है तो ड्रॉ कर सकते हो। इसके वजह से आपको 2 बनेगा। हमको टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स भरना है? वी नीड टू फिल मैक्सिमम ऑफ 7 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सो आपको टोटल यू नीड टू फिल 7 इलेक्ट्रॉन्स, राइट? 1 2 3 4 5 6 7। ये Li2 माइनस का हुआ। एक एक का देखे क्या? This is for Li2. What is the bond order for Li2? 1. 1. It is yeah, bond order is 1. What is the bond order for Li2 minus? Half. Half. 0.5. 2. It is coming to be half. Li2 पॉजिटिव के लिए Half. Half. एक इलेक्ट्रॉन Half. हटाना। Li2 पॉजिटिव के लिए ओके ओके या इसमें भी बॉन्ड ऑर्डर इज हाफ। ओके, अलग अलग से थोड़ा 3 डायग्राम मार्क कर ही लेते फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बट एग्जाम में आपको इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं, पता चल जाएगा आपको। ओके, दिस इज फॉर Li2, दिस इज फॉर Li2 माइनस, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। दिस इज फॉर Li2 पॉजिटिव, राइट? ओके, सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसके लिए है? Li2. Li2. तो सबसे ज्यादा स्टेबल क्या होगा? Li2. Li2, so Li2 ग्रेटर देन, उसके बाद you Li need to, positive. Li2 positive. हाँ, क्योंकि इसमें एंटी बॉन्डिंग में यू हैव ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स, इन दिस केस एंटी बॉन्डिंग में यू हैव 3 इलेक्ट्रॉन्स, सो बेटर विल बी Li2 पॉजिटिव। समझ में आया? इन दोनों में कंपैरिजन कैसे किया? एज इन Li2 पॉजिटिव as in Li2 negative, more electrons are present in ABMO. Okay. Next question. समझ में आया ना कैसे करना है? So based on this, arrange these following species in the order of stability again. Order of stability for H2, Li2, B2. Whenever you are given diatomic molecules, always get the answer using MOT. Always. कोई भी पूछा डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए हमेशा MOT के साथ ही करेंगे। Get the answer.
Answer? H2 greater than Li2 greater than B2. Yes, sir. Very good. Very good. H2 greater than Li2 greater than B2. In hydrogen, you have total number of electrons as 2. In Li2, you have 6. In B2, you have 10. 10. 10. Okay. एक ले लेते हैं इसमें से डायग्राम. तो बॉन्ड अगर सबकी वन होती है. बॉन्ड ऑर्डर सबका वन आता है. ट्रू. ओके. B2 के लिए ऑलरेडी हमने एक बार डायग्राम ड्रॉ किया था ना. इसको ले क्या फिट नहीं होगा इधर. ओके. दिख रहा है ना आपको? ओके. H2 के लिए you have this diagram. For Li2 you have this diagram, and for B2 this is the diagram. सबके लिए bond order पहले बताओ. इसके लिए H2 के लिए bond order it is 1. इसके लिए भी bond order 1. it is 1. Even for this the bond order is 1. 1. In case of H2 you don't have any antibonding electrons. In case of Li2 you have 2. In case of B2 the number of antibonding electrons are 1, 2, 3, 4. You have 4. More are the number of antibonding electrons, lesser will be the stability. Okay, so even though all of them are having bond order as 1, as H2 has least number of antibonding electrons, H2 stability is greater than Li2 is greater than B2. Okay. मोरओवर और एक तरीके से भी हम बता सकते हैं. इसमें B2 के केस में ठीक है, 4 you have 4 anti-bonding molecular orbital electrons, but the nature of the bond here is pi bond. Here you have sigma bond. In H2 as well as Li2 the bonds are sigma bonds. So ये दोनों obviously ज्यादा stable रहेंगे इसके comparison में. Clear? Everyone, is this clear? Yes, sir. Okay, let's end of MOT theory. Let's go to properties of covalent molecules or properties of bonds in covalent molecules. Very, 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 very important. Properties of bonds in covalent molecules. Okay, first property. Bond length. First property, bond length, represented by symbol Bl. First of all, tell me the definition of bond length. Anyone? The distance between the nuclei of two atoms. Very good. It is defined as nuclei of two bonded atoms. It is defined as the internuclear distance between two bonded atoms.
Okay. Factors affecting bond length. Okay. What can you comment on bond length based on bond order? Inversely proportional. Inversely proportional. Inversely proportional. More is the bond order, more are the attractive forces. More are the attractive forces, closer will be the atoms or bond length will be less. Very good. The bond order is, it is nothing but multiplicity of bonds, जो हम periodic properties में भी पढ़ा. Multiplicity of bonds. ये जो bond length है, it is inversely proportional to bond order. Very good. Example, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहा तो उसका बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगा, फॉलोड बाय डबल बॉन्ड. कार्बन की वैलेंसी 4 है इसलिए 4 बॉन्ड्स दिखा रहा हूं उसको, फॉलोड बाय ट्रिपल बॉन्ड. ओके. सेकंड फैक्टर, एटॉमिक रेडियस. एटॉमिक रेडियस डायरेक्टली और इनवर्सली? Directly. Directly. Directly proportional. Bond length is directly proportional to atomic radius. More is the bond length, sorry, more is the atomic radius, more will be the bond length. Suppose if I want to compare the bond lengths in HF, HCl, HBr and HI, what will be the order of bond lengths? HF less than HCl less than, HBr less than, HI. Easy enough? And third, based on electronegativity difference. More is the electronegativity difference, more will be the charges attained by the bonded atoms. More are the charges, extra attractive forces will be generated, because of that atoms will be coming close to each other and the bond length will be decreased. And this can be seen using Stephenson's formula. याद है Stephenson's formula? ये भी हम periodic properties में देखा. Distance between two atoms is RA plus RB minus 0.09 times electronegativity difference. Okay, जितना ज्यादा electronegativity difference रहेगा, okay, उतना कम bond length होगा. Next, hybridization or percentage as character. Hybridization or percentage as character. बताओ, bond length directly proportional होगा या inversely proportional होगा? I will give you example, उसके हिसाब से आप लोग बताओ. Compare the bond lengths in these molecules based on hybridization. What is the hybridization of carbon in this? sp3 sp2 sp. इसमें sp3 है ना, इसमें साइड एटम्स 3 ही है, so you have sp2, उसमें साइड एटम्स 2 ही है, एक ये कार्बन हुआ और ये इधर एक साइड एटम रहेगा ना. So here the hybridization is sp. What is the order of bond length in this case? This greater than, ये greater than ये है ना. sp3 ऑलरेडी हमने ये भी पढ़ा, sp3 जो ऑर्बिटल है वो बड़ा रहेगा when compared to sp2 and sp. Okay, so I can say bond length जो है it is inversely proportional to percentage as character.
sp3 में परसेंटेज s कैरेक्टर कितना है? 25 ही है ना, 25. और इसमें बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा है, इसमें परसेंटेज s कैरेक्टर 50 हो गया, बट बॉन्ड लेंथ सबसे कम है। ओके आप लोग मटेरियल में इसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस रहेगा, क्योंकि ये तो आपको ऑब्वियस लग रहा है, यू नीड नॉट कंपेयर दिस बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन, यू कैन कंपेयर दिस बेस्ड ऑन मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड्स। इसमें वैसे लग रहा है, बट कुछ और केसेस में कुछ हेल्प हो सकता है। सो इफ यू आर सॉल्विंग द मटेरियल देन यू कैन सी वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। ओके नेक्स्ट, second bond property, which is bond energy. How can you define bond energy? Bond energy represented by symbol Be. How can you define bond energy? Bond energy is defined as amount of energy required to break 1 mole of bonds. To break 1 mole of bonds present between two atoms. Okay. In general, in chemistry, each and every definition, usually it is taken for 1 mole as a reference. So bond energy bhi jo hai, it is defined as the amount of energy required to break 1 mole of bonds. Again, let us see the factors affecting bond energy. अगर आपको बॉन्ड लेंथ का कंपैरिजन आ गया तो बॉन्ड एनर्जी का इन जनरल उल्टा ही रहता है। सो पहला फैक्टर एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस, इज इट इनवर्सली प्रोपोर्शनल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? Inversely proportional. Very good. More is the atomic radius, greater will be the bond length, less will be the bond energy. Okay. Example. HF, HCl, HBr, HI. Order of bond energy. HF greater than HCl greater than. HBr greater than HF. HF greater than HCl greater than HBr greater than HI. Okay. ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये थोड़ा एक्सेप्शन जैसा रहेगा। इफ आई टेक halogens ClCl, Br bond Br, F bond F, I bond I. This is the order of bond energy. Cl2 is greater than, Br2 is greater than, F2 is greater than I2. F2 is greater than I2. Expected क्या होना चाहिए? F2 का सबसे ज्यादा bond energy होना चाहिए, followed by Cl2, Br2, I2. इसमें रीजन ये होता है, on each fluorine you have 3 lone pairs and fluorine का size सबसे कम है. These 3 lone pairs are present in the second shell. So because of the smaller size of fluorine, the lone pair repulsions are very much significant. Okay. As a result, the stability decreases. Repulsive forces ज्यादा है तो क्या होगा? Stability क्या होगा? घटेगा ना? Okay. So इसमें due to 3 lone pair repulsions,
bond energy in fluorine decreases. Okay, in fact F2 और I2 का almost same होता है. F2 and I2 have nearly same bond energy. Is this clear? सर क्लोरीन में भी 3 लोन पेयर है ना? क्लोरीन में भी 3 लोन पेयर है, बट दैट इज सब में 3 लोन पेयर सी है, बट क्लोरीन में थर्ड शेल में है. थर्ड शेल थोड़ा बड़ा है ना, so lone pairs are sufficiently spaced. Lone pair repulsions are relatively less. Relatively फ्लोरीन में छोटा साइज होने की वजह से, ड्यू टू 3 लोन पेयर रिपल्शंस एंड स्मॉल साइज, ये जो 3 लोन पेयर रिपल्शन सिग्निफिकेंट इसलिए हुआ बिकॉज ऑफ स्मॉलर साइज ऑफ फ्लोरीन. क्लियर? Yes. Okay, next factor, bond order, directly or inversely? Inversely. Inversely. More is the Directly bond order, proportional. more will be the bond energy ना. More are the number of bonds, उतना ही ज्यादा एनर्जी लगेगा उसको ब्रेक करने के लिए. So bond order or bond energy is directly proportional to bond order. Again, I can give the same example of carbon. Single bond, double bond, and triple bond. Bond energy order will be greater than. Okay, and in my hybridizations भी बता दो. This is sp3, sp2, sp. So percentage s character के sorry greater than नहीं, less than ना, less than. Percentage s character के हिसाब से bond energy, is it directly proportional or inversely proportional? Directly proportional. proportional. Directly proportional. Good. Okay. ठीक है. This is about bond energy and bond length. Now let us compare the most important factor, which is bond angle. Bond angle. How can you define bond angle? Angle between the bonds. Angle between the bonds, simple definition. सही है. The angle between two adjacent bonds around an atom. And in general, we will see the central atom. Okay. Factors affecting bond angle very important है. जो bond angle के ऊपर क्वेश्चन आने का probability बहुत ज्यादा है. Bond energy और bond length जो है उसमें उतना probability थोड़ा कम है, but bond angle जो है it is very important. You can expect a question. Let us see the factors influencing bond angle. अभी इसमें कुछ set of factors पढ़ेंगे. While solving the question, you need to apply these factors in the same order. So पहले
जो फैक्टर पढ़ रहे हैं, अगर उससे आंसर नहीं आ रहे तो देन वी विल बी गोइंग टू द नेक्स्ट फैक्टर. अगर उससे भी आंसर नहीं आ रहे तो वी विल बी गोइंग टू द थर्ड फैक्टर, so on so forth. Okay, so we will be starting with factors. First factor you need to see is percentage S character. Percentage S character, which is determined by hybridization. अगर sp hybridization है तो बॉन्ड एंगल कितना रहेगा? 180. 180. sp2 है तो 120. 120. sp3 है तो 109.5. 109. So what is happening to the bond angle if percentage S character is decreasing? Decreasing. वो भी decrease होता है. Decreasing. So bond angle is directly proportional to percentage S character. Okay, you can see the examples. If you take CO2, BF3, CH4, इसमें hybridization is sp, इसमें hybridization is sp2, इसमें hybridization is sp3. So the bond angles are 180 degrees, 120 degrees, 109.5 degrees. So more is the S character. Can you see more is the bond angle? Okay, Yes, sir. everyone, I hope this is clear. सबसे पहले percentage S character देखना है. अगर उससे आंसर नहीं आया हमें, then we will go to number of lone pairs on central atom. Number of lone pairs on central atom. We know lone pair repulsions and lone pair bond pair repulsions are greater when compared to bond pair. So लोन पेयर्स बढ़ता जा रहा है तो क्या होगा? लोन पेयर के बीच में रिपल्शन कम होने के लिए उन दोनों के बीच में बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा. सो बॉन्ड पेयर के बीच में क्या हो जाएगा? बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा. कम हो जाएगा. लोन पेयर के बीच में बढ़ रहे तो बॉन्ड पेयर के बीच में घट रहे. सो as the number of lone pairs increase, what is happening to the bond angle? It is Decrease. decreasing. So it is inversely proportional to number of lone pairs on central atom. I hope ये वाला point आपको समझ में आया, ऐसा क्यों हो रहा है. सर एक बार रिपीट करो. Lone pair repulsions are greater when compared to bond pair repulsions. So कोई भी एक एटम के ऊपर लोन पेयर्स बढ़ गया. एग्जांपल देखो CH4, NH3 and H2O. सबसे पहले we need to compare by hybridization. This is sp3, nitrogen 1 lone pair and 3 side atoms, AB sp3. Oxygen 2 lone pairs, 2 side atoms, AB sp3. सब में hybridization same है. Okay, so we cannot compare using hybridization. 1C for the lone pairs, 0 lone pairs, इसमें 1 lone pair, इसमें 2 lone pairs. हमने ऑलरेडी पढ़ा जब लोन पेयर्स आ जाता है, लोन पेयर के बीच में रिपल्सिव फोर्सेस कम करने के लिए उनके बीच में हम एंगल बढ़ाएंगे और बॉन्ड पेयर के बीच में तब एंगल घटना ही पड़ेगा ना. इसमें 2 लोन पेयर्स है. सो इन दिस केस द बॉन्ड एंगल बिटवीन बॉन्ड पेयर विल बी डिक्रीज्ड मोस्ट. इसमें एक ही लोन पेयर है. सो लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में बढ़ेगा और बॉन्ड पेयर के बीच में घटेगा इस केस में, है कि नहीं? Yes, sir. And the bond angles are also is आपको NH3 और वाटर के बॉन्ड एंगल्स भी याद रखना पड़ेगा. NH3 is 107 degrees, water is 104.5 degrees. कभी कभी ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन भी आता है, NH3 में कितना होता है. कंपैरिजन करने में ठीक है, कंपैरिजन कर सकते हैं, बट एग्जैक्ट वैल्यू पूछा तो आप लोग को इन दोनों के याद रखना पड़ेगा.
I hope this is clear. Next factor, suppose in case हमारे पास hybridization भी same है, number of lone pairs भी same है, तब क्या करेंगे? Then we will be seeing electronegativity of central atom. Electronegativity of central atom. एक एग्जाम्पल से देख के then we will see directly proportional होगा, inversely proportional होगा. Let us take H2O and H2S. H2O, tell me the hybridization. sp3 H2S. सल्फर के outermost electrons 6, 2 हाइड्रोजन्स के लिए 2 चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन्स बचा, 2 lone pairs, 2 side atoms. It is also sp3. I hope everyone are able to solve for hybridization. Okay. In this case, lone pairs. ऑक्सीजन के ऊपर 2 lone pairs है, सल्फर के ऊपर 2 lone pairs है. So 2 lone pairs, 2 lone pairs. So we are unable to compare using lone pairs as well as hybridization. तब क्या करेंगे? We will be comparing using electronegativity of central atom. Angular है ना, ऐसा कुछ होता है ना. Out of sulfur and oxygen, which is more electronegative? Oxygen. So जो electrons जो है relatively oxygen के पास ज्यादा रहेंगे when compared to hydrogen. And sulfur इस केस में सल्फर के पास उतना क्लोज नहीं है. सो इन दोनों के बीच में अब डिस्टेंस क्या हो गया? व्हाट इज हैपनिंग टू द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू बॉन्ड पेयर्स? पास में आने की वजह से increases. डिस्टेंस घट गया है ना. ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर से दूर है तो डिस्टेंस ज्यादा होगा. अभी ये बॉन्ड्स में पास में आने की वजह से इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कम हो गया. ओके, सो रिपल्सिव फोर्सेस बढ़ जाएगा ना. So in order to decrease those repulsive forces, what will happen to the bond angle? To decrease repulsion among bond pair electrons, bond angle increases. इस केस में ऑलरेडी रिलेटिवली दूर ही है. ओके, सो बॉन्ड एंगल उतना ज्यादा बढ़ेगा नहीं when compared to H2O. So bond angle in H2O is greater when compared to bond angle in H2S. समझ में आया? Is this clear? Sir, please explain again. देखो, अभी हमको bond angle कैसा है देखना है. We can compare using hybridization or we can compare using lone pairs. If both the things are same, इसमें भी hybridization sp3, sp3, 2 lone pairs, 2 lone pairs. Then we will be comparing using electronegativity of central atom. ये जो oxygen है being more electronegative, the electrons are, the bond pair electrons are pulled towards oxygen. जब ये पास में जा रहे इलेक्ट्रॉन्स, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या हो रहे? कम हो रहे ना. डिस्टेंस कम होने की वजह से रिपल्सिव फोर्सेस बढ़ेगा. सो टू डिक्रीज दोज रिपल्सिव फोर्सेस, द बॉन्ड एंगल विल बी इंक्रीज्ड. आया समझ में? अभी बॉन्ड एंगल बढ़ गया तो इवन दो द इलेक्ट्रॉन्स आर कमिंग क्लोज, द डिस्टेंस इज मोर, राइट? आया समझ में? यस सर. सर NH3PH3 में भी सेम होगा ना? एवरीवन समझ, NH3PH3 में भी सेम रहेगा वैसा ही, एग्जैक्ट. So what can I comment on bond angle based on electronegativity of central atom? It is directly proportional. More is the electronegativity on central atom, वो electrons उतना ही पास में आ जाएंगे, repulsive forces उतना ही ज्यादा होगा. So to decrease the repulsive forces, the bond angle will be increased. Is this clear? Yes, sir. Last factor, अगर पहले 3 सेम हो गया, हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है, नंबर ऑफ लोन पेयर्स भी सेम है, सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम है,
then you need to see for electronegativity of Right. side bonded atoms. Electronegativity of side atoms. Okay. Again, we will understand this using an example. Take the case of NH3 and NF3. Hybridization. sp3, AB, sp3. You have one lone pair each, one lone pair, one lone pair. Central atom दोनों cases में you are having it as nitrogen. So अभी side atom के बारे में देखो. इसके पास एक lone pair है, nitrogen. Fluorine, fluorine, fluorine. Again, अब side atoms के हिसाब से देख रहे तो which is more electronegative, nitrogen or fluorine? Fluorine. Fluorine. So electrons are going away from that particular central atom. In this case, nitrogen being more electronegative, it is coming towards that particular central atom. So distance और जो repulsive forces है bond pairs में किस केस में ज्यादा है? NH3. NH3 के केस में, because इसमें पास में आ रहे हैं ना. So in order to decrease the repulsive forces, what should happen? The bond angle must increase, right? है कि नहीं? Okay. The bond angle in NF3, अगर value देखा तो it is 102.5 degrees. In NH3 it is 107 degrees ना? Right? So based on electronegativity of side atom, more is the electronegativity of side atom. So bond angle क्या है उसमें कम हो रहा है. So it is inversely proportional to electronegativity of Side atoms. Is this clear? Okay. Everyone. Any doubt? So you need to apply these 4 factors in the same order. सबसे पहले percentage S character, then number of lone pairs on central atom, then electronegativity of central atom, then electronegativity of side bonded atoms. I will give you some homework questions. Mark the order of bond angle in increasing order. Okay. Arrange the following in increasing order of bond angle. CO2, SO2, SO3, NO2 minus, NO3 minus, NO2 positive, BF3, CH4, H2O, NH3, NH4 positive, NH3, NH2 negative. Do these 4 questions as homework. You need to apply these points in the same order and try to get the answers. We will discuss this in the next lecture. Thank you.